Good morning, children. In today's session, we will start with page number 6, chapter number 1, the fish tail. How long will they take to go a distance of 10 kilometers? In the last session, we discussed about logboat. So from there we are continuing. So this question is for logboat. How long will they take to go a distance of 10 kilometers? In 1 hour, logboat travels 4 kilometers. It is already given in your textbook. Therefore, in 2 hours, logboat travels 4 into 2 equals to 8 kilometers. And in half hour, the logboat travels 4 into half equals to 2 kilometers. So, total time to travel 10 kilometers equals to 2 hours plus half hour equals to 2 hours and 30 minutes. Now the next question on the same page. Guess how far you can go in 1 hour if you walk fast. अगर आप जल्दी जल्दी चलते हैं तो 1 घंटे में आप कितनी दूर तक चल सकते हैं? दिस यू हैव टू गैस ओनली. आपको सिर्फ गैस करना है. डोंट ट्राई, बिकॉज अभी आप लॉकडाउन में है, बाहर जाना बिना बात के मना है. सो डोंट ट्राई दिस एक्टिविटी. Fishermen can feel the wind and look at the sun to find out which way to go. Many of us would get lost and not be able to find our way on the sea, where you only see water, water and nothing else. Fishermen हवा की मदद से, हवा के रुख की मदद से और सूरज को देखकर पानी के अंदर अपना रास्ता खोज निकालते हैं, जहाँ मैं आप और हमारे जैसे लोग खो सकते हैं या खो जाएंगे, जहाँ पर चारों तरफ सिर्फ पानी पानी और कुछ नहीं दिखाई देगा. Look at this picture. What a long sword fish. Look at the different types of boats. ऊपर वाली दोनों बोट मोटर बोट है, नीचे लॉन्ग टेल बोट और एक बिग मशीन बोट जिसको ट्रॉलर भी कहते हैं. How far would the motorboats go in 3.5 hours? In 1 hour, the motorboat goes 20 kilometers. It is given in your textbook. Hence, in 3 hours, the boat will go 3 into 20 equals to 60 kilometers. And in half hour, the boat will go half into 20 equals to 10 kilometers. So we'll add 3.5. So in 3.5 hours, the boat will add 60 kilometers plus 10. 60 plus 10 equals to 70 kilometers. We can also solve this problem in another way. First, you have to write hours and kilometer. Then you put the information which is already given in your textbook, that is, in 1 hour
the motorboat will go 20 kilometers. So in 3.5, 3.5 can also be written as 3.5. So in 3.5 hours, how much? Now the things which are in cross, here it is 3.5 and 20, both the number will be multiplied and will divide it with 1. So the equation would be something like this: 3.5 multiplied by 20 divided by 1. The things which are in cross, that is 3.5 and 20, will be multiplied, and the number which remains, that is 1, will put it into a division. So the answer would be 70 kilometer. This 3.5 multiplied by 20 divided by 1. Let us solve this in detail. See, 3.5 multiplied by 20 divided by 1. So आप बहुत लोगों को ये पॉइंट में मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, तो हमने इसको थोड़ा सा ईजियर बनाने की कोशिश की है। ईजियर बनाने के लिए हमने 4th स्टैंडर्ड में भी डिस्कस किया था कि अगर हम फ्रैक्शन वाले नंबर है या ऐसे कोई नंबर है जो पॉइंट में नंबर है, तो हम क्या करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3.5 लिखा हुआ है, इट इज़ 3.5. सो आफ्टर पॉइंट देयर इज़ अ 1 डिजिट। 3.5 में पॉइंट के बाद एक डिजिट है जो कि है 5. सो पॉइंट के बाद जितने डिजिट होता है उतने ही हम उसके डिवीजन में 1 के बाद 0 लगाते हैं. सो हियर देयर इज ओनली 1 डिजिट, सो विल पुट 1 0 आफ्टर 1. सो 3.5 becomes 35 by 10. सो 35 by मल्टीप्लाई बाई 20 और नीचे सिर्फ 1 था, सो 10 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल्स टू 35 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 700 और 10 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 10. सो 10 70s are 700 और you can cut directly zeros. So you will get the answer 70 kilometer. Next question, how much time will they take to go 85 kilometer? So again kilometers and minutes. It takes 60 minutes to travel 20 kilometers. सो यहाँ पे हमें टाइम फाइंड आउट करना है, इसलिए हमने मिनट्स को बाद में रखा हुआ है. हमें जो भी फाइंड आउट करना होगा वो हम बाद में रखेंगे. जैसे कि अगर हमको किलोमीटर पूछेंगे तो पहले मिनट्स और बाद में किलोमीटर. अब यहाँ पे टाइम फाइंड आउट करना है तो हमने पहले किलोमीटर रखा हुआ है और बाद में मिनट्स रखा हुआ है. सो 20 किलोमीटर्स के लिए 60 मिनट्स लगते हैं, राइट. अगर आप आवर्स लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, 60 मिनट्स करके वो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, इसलिए अब यहाँ पे मिनट्स लिखा हुआ है. 1 आवर इज़ कन्वर्टेड इनटू मिनट्स. सो 20 किलोमीटर के लिए 60 मिनट्स. सो 85 किलोमीटर्स के लिए कितने मिनट्स होंगे वो हमें फाइंड आउट करना है. सेम थिंग, जो भी चीज़ें क्रॉस में है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और जो बचा हुआ है उसको हम डिवीज़न में रख देंगे. सो यहाँ पर 85 और 60 को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके डिवीज़न में आएगा 20, लाइक दिस. जब हम इसको सॉल्व करेंगे विल गेट आंसर 255 मिनट्स. सो इट कुड बी रिटन एज लाइक दिस ऑल्सो, 4 hours and 15 minutes. ये जो 85 मल्टीप्लाई बाई 60 डिवाइड बाई 20 है उसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके एक बार फिर से देख लेते हैं. ध्यान से देखिए, 85 मल्टीप्लाई बाई 60, इफ़ यूल डू दिस यू विल गेट 5100 और डिवीज़न में जो 20 है वो एज इट इज़ हम रख देंगे. 0 and 0 गेट्स कैंसल and 510 divided by 2 you will get 255 minutes. Now we will convert this 255 minutes into hours. So converting minutes into hours, 60 minutes equals to 1 hour. So 60 plus 60 plus 60 plus 60, you can see that 60 is repeatedly added 4 times,
and then the remaining 15 minutes. So 60 repeatedly added for 4 times, that is 4 hours and 15 minutes. So 255 minutes is converted into hours, then you get then it can be written as 4 hours and 15 minutes. About how much fish in all will each type of boat bring in 7 trips? So here you can see 3 columns. In first column, the name of the boats are written, that is log boat, long tail boat, motor boat and machine boat. In column number 2, it is written catch of fish in one trip. Log boat brings in one trip 20 kilogram, long tail boat brings 600 kilogram, motor boat brings catch of fish in one trip 800 kilogram, machine boat brings catch of fish in one trip 6000 kilograms. So catch of fish in 7 trips. So ये बहुत ही simple है. It is very simple. You have to just multiply kilogram of one trip with 7. So log boat in one trip, it brings 20 kilogram of fish. So in 7 trip it would be multiplied by with 7. So 20 multiplied by 7 equals to 140 kilogram. See, multiplication of these kinds are very easy. आपको क्या करना है, ज़ीरो पहले ही रख देना है, जितने भी हो 1 2 3, put the zeros as it is and then multiply the rest of the digits left. See, in this 20 multiplied by 7, we are putting 0 first. We'll put 0, then we'll multiply 7 into 2, that is 14. So our answer would be 40. Let us see the next question. Long tail boat, it brings 600 kilogram of fish in one trip. So for 7 trip it would be multiplied with 7. So 600 multiplied by 7. So here also we'll put both the zeros of 600 first and then we'll multiply the rest of the number, that is 7 multiplied by 6. So 6 sevens are 42, you know it. So we'll write 42 and 2 zeros was already there, so 4200. Motor boat brings 800 kilogram of fish in one trip. So for 7 trip, 800 multiplied by 7 equals to 5600 kilograms. Machine boat brings 6000 kilogram in one trip. So 6000 multiplied by 7 for 7 trips. So 42,000 kilogram in 7 trips. About how far can a motorboat go in 6 hours? So hours and kilometer is already given in your textbook that in 1 hour the motorboat goes 20 kilometers. So in 6 hours it is very easy. You know, 6 and 20 will be multiplied and 1 will put 1 into division. So 6 multiplied 20, 6 multiplied by 20 divided by 1 equals to 120 kilometer. A motorboat can go 120 kilometer in 6 hours. If a long tail boat has to travel 60 kilometers, how long will it take? So again यहाँ पर आपको टाइम पूछा है तो पहले हम किलोमीटर लिखेंगे और फिर मिनट्स या तो आवर्स लिखेंगे. तो पहले किलोमीटर फिर आवर्स. 12 किलोमीटर के लिए 1 आवर लगता है. देन 60 किलोमीटर्स के लिए हाउ मच? अगेन विल मल्टीप्लाई 60 विथ 1 एंड विल पुट 12 इनटू डिवीजन. So 60 multiplied by 1 equals to 60 and it would be divided by 12. So 12 के टेबल में 12 5s are 60. So 5 hours. A long tail boat will take 5 hours if it has to travel 60 kilometer. Now page number 10. On page number 10, some big numbers. In the class 4th math magic, you heard of number lakh, which is equal to 100,000. You had read that there are about 1 lakh brick kilns in our country where bricks are made. So in class 4th math magic book,
यू हैड रीड अबाउट ब्रिक किल्स, जहाँ पे ब्रिक्स बनाई जाती है, राइट, ईंटों का भट्टा भी कहते हैं उसको. सो देर आर अबाउट 1 लाख ब्रिक किल्स इन आवर कंट्री. ऐसा सुना था हमने, जैसे पढ़ा भी था. और उसके बाद हमने लैक वर्ड सीखा था कि लैक वर्ड क्या होता है, उसमें कितने ज़ीरोज़ होते हैं, राइट, इफ़ यू रिमेंबर. ओके, इफ़ यू डू नॉट देन ऑल्सो विल रिवाइज, इट्स फाइन. सो व्हाट अदर थिंग्स हैव यू हर्ड इन लैक्स. लैक्स में हम कौन सी चीज़ें सुनते हैं या आपने सुनी है. सो यू कैन राइट योर ओन आंसर, but you should write your answer something like this, that I have heard about the following things in lakhs: population of city, population of some country, right, number of vehicles, cost of cars, of course. Now the next question, write the number 1000. आपको लिखना है 1000. It's very easy, एक के बाद 3 0, right? So 1000. Now write 100,000. So 100 दो ज़ीरो वाला, राइट. सो 100 and 1000, so 3 more zeros, so 100,000. so how many zeros are there in number 1 lakh. 1 लाख में, 1 लाख में कितने ज़ीरोज़ है. तो you can see there are 5 zeros. It is very easy, isn't it? There are about 2 lakh boats in our country. हमारे देश में 2 लाख बोट्स जैसे 2 लाख जैसी बोट्स हैं. देर आर अबाउट 2 lakhs बोट्स इन आवर कंट्री. हाफ ऑफ देम आर विदाउट ए मोटर, जिसमें से आधी में मोटर नहीं है. व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बोट्स विद अ मोटर. तो ऐसी कितनी बोट्स है जिसमें मोटर है, राइट. सो हाफ ऑफ देम आर विदाउट मोटर, सो रेस्ट ऑफ द हाफ वुड बी विथ मोटर. सो लेट अस कैलकुलेट. So out of 2 lakh boats, half of them are without motor or half of them are with motor. So 2 lakh multiplied by half, so you'll get the answer 1 lakh. So 1 lakh boats are with motor. About 1/4 of boats with motor, ये जो ऊपर फाइंड आउट किया हमने है ना, बोट्स विथ मोटर है वो. सो अबाउट 1/4 of boats with motor are big machine boat. How many thousand machine boats are there? Come on, try to do it without writing. We can do it without writing, right? So 1 lakh is multiplied by 1/4. So 1 lakh का 1/4, आधे का आधा. So half of half. So 1 lakh, its half is 50,000, and again its half is 1 lakh, its half is 50,000, and again its half is 25,000. So 1 lakh multiplied by 1/4 equals to 25,000. So there are 25,000 machine boats in our country. We might wonder what the number of people whose lives are related to fish. In all, there are about 100 lakh fish workers who catch fish, clean and sell them, make and repair nets and boats, etc. We also have a name for this big number. 100 lakh is called a crore. Where have you heard of a crore? What was the number used for? Maybe population of our country, India. Maybe wealth of some rich people like Ambani and Adani. Maybe. So you find out. Then try writing the number 1 crore. Don't get lost in all the zeros. Right? That's all for